periodic table. Right, so periodic table is, we are going to start periodic table. This periodic table, I think this is showing some problems. Periodic table. Right, every one of you, is the screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay, so we are going to start periodic table. This is actually what this is one of the table, you can say that, which is very important in chemistry. And by this table, you are going to do many things that are going to be, you can say that, very important in chemistry. If you know this table, if you are aware about this table, that means you know the half chemistry, right? So let's start with the definition of this. So what is the definition of periodic table? So actually this is what? Arrangement of elements. This is actually what? This is arrangement of elements. You can say that this is actually arrangement of elements, right? We have 118 elements in the periodic table. We have 118 elements in the periodic table, and they are arranged in the periodic table. So you can say that this is arrangement of elements on the basis of increasing proton number, on the basis of increasing proton number, on the basis of increasing proton number. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes, what is proton number? Do you know what is proton number, bacho? I think you all are aware about the word positive charges. Positive charges present in the nucleus, right? So if you talk about like this is one of the element in the periodic table. Like I am selecting sodium, right? This is one of the element in the periodic table, and over here there are two numbers given over there in the periodic table with this element symbol. So the one which is capital one, do not remember this like कि जो बड़ा हो या कोई छोटा हो, इस तरह याद नहीं रखना आपने याद रखना है the one which is the capital one, ठीक है ना? राइट पे हो, लेफ्ट पे हो, ऊपर हो, नीचे हो, कहीं पर भी हो, the one which is capital one is always nucleon number. It is always nucleon number. You can name this as mass number as well. You can name this as atomic mass as well. So these are three vocabularies for this number, which is the capital one, right? And the one which is smaller, अब ये ऊपर लिखा हुआ हो, नीचे लिखा हुआ हो, कहीं पर भी लिखा हुआ हो, this is actually what? Proton number. This is actually proton number, or you can say that this is what? Atomic number. You can name this as atomic number. So these two are actually, इसकी वजह से पूरा periodic table आपके पास maintain है, ठीक है ना? इसकी basis पे पूरा periodic table आपके पास arranged है, ठीक है ना? Why we are arranging the elements on the basis of proton number? Why we are not using mass number? We are using proton number because this is the speciality of any element. So you need to know this, that this is actually a speciality of any element. It is like our fingerprints, right? If you talk about our fingerprints, so this is actually the, you can say that it is like, यार ये दुनिया में हमारा ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, ये हमारी स्पेशलिटी है, हाँ, ये हमारी, you can say that this is our recognition, right? अगर हम कहीं पर भी अपना thumbprint लेके जाएंगे तो it is completely different by the thumbprints of the other peoples in the world, right? So same as it is, proton number is actually the identity of the elements, right? इसके अलावा किसी का भी प्रोटॉन नंबर नहीं हो सकता एक जैसा. तो अगर 11 है तो 11 सोडियम का ही होगा, इसके अलावा अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो उसका 11 नहीं हो सकता. मैग्नीशियम होगा तो 12 हो जाएगा, एल्युमिनियम होगा तो 13 हो जाएगा. 13 अगर एल्युमिनियम का है, 13 किसी और का नहीं हो सकता, एल्युमिनियम का ही रहेगा 13, ठीक है ना? अगर 14 हो गया तो फिर वो सिलिकॉन बन जाएगा, वो एल्युमिनियम नहीं रहा, ठीक है? सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, प्रोटॉन नंबर इज एक्चुअली द आइडेंटिटी
of element. This is actually the identity of element which can never be changed, right? And you can say that it is actually the number of protons. This is actually the number of protons present in the nucleus of an atom, present in the nucleus of an atom. Is that clear, Bacho? Yes. Right. And one more thing that you need to keep remember if you talk about mass number. So if you focus over potassium and argon, right? Or for example, पोटेशियम का एक आइसोटोप ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास 39 होता है, ठीक है ना? देखें दे बोथ हैव 39 एटॉमिक मास, राइट? और इसका जो प्रोटॉन नंबर है इट इज 19 और इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो 18। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आर्गन का और कैल्शियम का आपको एक जैसा नजर आएगा, ठीक है ना? कैल्शियम और आर्गन का आपको नजर आएगा 40-40, ये एवरेज एटॉमिक मास है। आर्गन का 2 से 3 इसके आइसोटोप्स का मास एवरेज लिया जाता है, 40 आता है, बट इसका 18 है, इसका 20 है प्रोटॉन नंबर। सो यू कैन सी दिस, प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज डिफरेंट, द मास नंबर कैन बी सेम but proton number is always different. So we always keep the elements in the periodic table on the basis of proton number, not the mass number. Keep this in your mind, right, Bacho? Is that right, every one of you? Yes, sir. Okay, then let me draw a periodic table for you, Bacho. I'm trying to draw a periodic table for you, and it may be a little bit, you can say that, thoda sa weird hoga ye, but I just try for you. So for example, आपके पास ये है group 1, ये है आपके पास group 2. These are actually columns, right? So ये आ गया आपके पास group 1, and this is, we have group 2. We know the elements present over there, right? कौन-कौन से elements होते हैं भाई? group 1 में आप जो है बच्चों कंसीडर नहीं कर सकते हो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अलग से होता है। तो ग्रुप 1 में एक्चुअली आपके पास होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, cesium, francium. These are the elements present in group number 1. And if you talk about group number 2, so we have beryllium, we have magnesium, we have calcium, we have strontium, we have barium, and we have radium. So these are the elements present in group 2. Then we have some elements over here as well: scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. And then after that we have group number 3. So over here we have group number 3, right? Group number 3, group number 4, group number 6, 7, 8. Yes. Sir, your voice is not clear. Uh, now, Yes, sir. yes, is that clear now? Yes, sir. Okay, thank you. Groups to understand. So the very main element over there, number 3 is the ammonium. Sorry, yes. So ammonium, right? And in group number 4 we have silicon, aluminum, and we have phosphorus and ours. And number 6, oxygen, sulfur, selenium. Group number 1 we have थोड़ा मुझे ऐसा रहा है,
right? Chlorine, bromine, theme, that over we have सर आपकी आवाज अभी भी कट रही है. radon. These are actual elements that are used. खास कर issue ये था. सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. और फिर स्क्रीन भी अच्छी है. हाँ चलो. बच्चों आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर. जी सर. अच्छा, मैंने अभी अपना इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है, तो होपफुली अब आपको आवाज मेरी क्लियर आएगी, और अगर अभी भी ना आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? Okay, so we have these actually elements over there in the periodic table that are more important for us, right? अब देखें, मैंने ये कोशिश की है वो सारे elements लिखने की जो कि आपको पता होने चाहिए, जिनसे आप familiar होने चाहिए, ठीक है ना? ये सारे वैसे periodic table में मौजूद होते हैं. periodic table आपके पास पेपर 1 में और पेपर 2 में given होता है, ठीक है ना? लेकिन ये वो सारे एलिमेंट जो कि बड़े कंसिस्टेंट पेपर में यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं. सो वी नीड टू अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. Now, actually, why I am doing this, because I just want you guys to understand this word. What is this? What is this? What is this? These are what? So these are actually, bacho, known as groups. They are known as what? They are known as groups. ये कहलाते हैं बच्चों groups. So I am writing over here, what is group? So group is actually, you can say that group is actually what? They are vertical columns of the periodic table, right? They are vertical columns of the periodic table, right? What are groups? You need to understand that कि vertical columns जो हैं periodic table में, वो आपके पास कहलाते हैं क्या बच्चों? Group. Vertical columns of the periodic tables are termed as groups. So they are group 1, group 2, group 3. And what they are going to show you, so you need to keep remember this thing as well, what group number indicates. What group number indicates, right? So you need to understand this. Group number indicates the valence electrons, right? It indicates the valence electrons. You need to keep remember that group number आपको क्या बताता है? ये बताता है आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी. Now, so बच्चों, if we are talking about group number 1, so how many electrons they all have in the outermost shell? They have 1 electron, right? So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, they all have 1 electron in the outermost shell. If you talk about group number 2, so how many electrons we have? 2 electrons. Group number 3, we have 3 electrons. Group number 4, we have 4 electrons. 5, 6, 7, and 8. Is that right, every one of you? Yes sir. Now the problem is this कि आपके पास ये जो ग्रुप 8 है ना, इसमें जो हीलियम है, इस हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन and the rest of all have 8 electrons, right? So that is why in the modern periodic tables they are termed as a zero order. You can say that it is termed as zero period. इसको हम zero period भी बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे ना, क्योंकि ग्रुप नंबर जो है आपके पास नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है बताता है ना. तो अब इसमें हीलियम के अलावा सबके पास 8 है, तो हीलियम जो है ओबे नहीं कर रहा है इस रूल को ना. So that is why in the modern periodic table, the periodic table group number 8 is termed as zero group, right बच्चों? और वो क्यों हम कह रहे हैं जीरो, हम कोई और लफ्ज क्यों इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है that group number indicates what the valence number of electrons as well as the charge as well. It also tells us what the charge as well, because we know that if someone has 1 electron in the outermost shell, to complete करने के लिए अपना outer shell, उसको वो electron lose करना पड़ेगा. 7 electron receive करना, it is not the easy task for the, you can say that the element. So उसको 1 electron donate करना पड़ेगा. जब वो 1 electron donate कर देगा, so the charge become what? +1, right बच्चों?
इसी तरह जो ग्रुप 2 के होंगे उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएंगे, +2। इज दैट राइट बच्चों? Yes, sir. और जिनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनेट करके +3 और ये +-4 दोनों कर सकते हैं। और ग्रुप 5 वालों के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे कैन रिसीव 3 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम -3, और ये -3 बन जाएंगे, ये -2 बन जाएंगे, -1 बन जाएंगे, और ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना गेन करेंगे। ग्रुप 8 वाले तो उनकी वैलेंसी होती है 0। दैट इज व्हाई वी पहले से स्टेबल है। टर्मिंग देम एज 0 ग्रुप। इज दैट राइट बच्चों? Yes. Yes. So these are the things that you need to understand। और एक और चीज क्या है एक और चीज ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ना आपके पास, ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहलाते हैं बच्चों? ये कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स भी आप इनको बोल सकते हैं। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और यू कैन टर्म देम एज ट्रांजिशन मेटल्स, राइट। अब ये हमारे ग्रुप में फिलहाल नहीं है एडेड, हालांकि ये भी देखें वर्टिकल कॉलम्स ही हैं। अगर आप इन पे फोकस करें तो दे आर आल्सो वर्टिकल कॉलम्स, और ये भी पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है, बट ओ लेवल्स में अभी हम इनको नहीं पढ़ते, हम इनको ए लेवल्स में पढ़ेंगे एज अ ग्रुप। ठीक है बच्चों? जी सर। चलें, so let's move on with the second vocabulary of the periodic table, which is known as periods. Now what is period? Period is also one of the very important word in the periodic table that you need to remember. What is period? The new thing over here, the word period. Period is actually what? These are actually horizontal rows. These are what? These are horizontal rows of the periodic table. These are actually what? Horizontal rows of the periodic table. And definitely they are going to tell us something, right? And what they are going to tell us, period number what indicates? Period number indicates what? It indicates the number of electron shells, the number of electron shell। अब एक एलिमेंट कितने shells cover करता है वो हमें period number बताता है बच्चों। So these are actually what period number, just look at over here, this is period number 1। यहाँ पर period number 1 कहला रहा है ये, right? क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम होगा। अब हाइड्रोजन यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख देता हूँ बीच में कहीं, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। तो ग्रुप 1 में मैंने लिख रहा वरना आप लोग बोलेंगे ग्रुप 1 का एलिमेंट है। Then this is period 2, this is period 3, period 4, period 5, period 6 and period 7। So these are actually periods that you need to keep remember for the periodic table। ये है आपके पास period 1 2 3 4 5 6 7। So period का मतलब है ये पूरी रॉ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी रॉ है इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे बच्चों ये सारे के सारे पीरियड 1 के एलिमेंट कहलाएंगे। सो इन सब के पास एक शेल होना चाहिए खाली, ठीक है ना, इन सब के पास सिर्फ एक शेल होना चाहिए। नाउ जस्ट लुक एट ओवर हियर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दीस थिंग्स। अब हम इसको क्यों समझना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसका हमें क्या फायदा होने वाला है। फॉर सपोज बच्चों मैंने आपको दिया कैल्शियम, and we know that calcium has the 20 proton number and 40 mass number, right? So we know that how many protons over here? We have 20 protons, we have 20 electrons and we have 20 neutrons over there। And we know that कि इलेक्ट्रॉन से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन सकती है। तो फर्स्ट शेल हैविंग 2 electrons, second 8, third 8 and then 2 electrons। So you can see this that last shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों? लास्ट शेल में है 2 electrons। so ये 2 electron बता रहे हैं that element belongs to group number 2। and if you focus the number of shells 1 2 3 4, so the number of shells telling that it should be in period number 4, right? so देखें क्या ये पूरा कर रहा है इन बातों को? yes, you can see over here that we have what? We have calcium which is present over here. Just look at over here, what is the group? Group is second. And what is the period? Period is 4। so you can check by this as well your electronic configuration that you are doing right or not। is that clear every one of you? Sir, can you explain it again, please? yes, for suppose बच्चों I am asking you to write the electronic configuration of chlorine। for suppose I am asking you
to write the electronic configuration of chlorine. मुझे आपसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवानी है, तो आप बोलेंगे सर हम ये कैसे लिखेंगे? तो देखें दैट्स प्रीटी सिंपल फॉर यू. यू कैन से दैट सर क्लोरीन है ग्रुप 7 का और इसका जो पीरियड है वो कौन सा है? इसका पीरियड है 3, राइट? सो यू कैन से दैट सर वी हैव 3 शेल्स फॉर क्लोरीन. हमारे पास 3 शेल होने चाहिए क्लोरीन के और लास्ट शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज फ्रॉम ग्रुप नंबर 7 और बाकी जो 2 शेल्स होंगे वो कंप्लीट होंगे. So without finding out the number of electrons, protons and neutrons, you are able to find out what the structure of chlorine. Is that clear, everyone? Right? Yes, sir. So this is the chlorine electronic configuration, or you can even say that, sir, it is from group number 7, so it can receive 1 electron to become -1 charge. So if you talk about chloride, so we can even write the electronic configuration of chloride as well. पहले शेल में तो 2 ही होंगे, दूसरे में 8 होंगे और आखिरी वाले में क्या होगा? 7 + 1 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? Yes, sir. Okay, so we can even draw the structure of this. For example, someone asks you to draw the structure of what? To draw the structure of, or suppose draw the structure of sulfur. If someone asks you to draw the structure of sulfur, you can say that sulfur is from group number 6 and the period is actually again the 3rd period. So you can say that, sir, we can easily draw the structure that we should have 3 shells, 1st, 2nd and like this, and in the 1st shell there should be 2 electrons, in the 2nd shell there should be 8 electrons, and in 3rd shell there should be 6 electrons, right? You can even draw the structure of sulfur as well. And if they ask for the sulfide ion, so you know that we just need to add 2 more electrons over there. So it is 1, it is 2, and it becomes 2- charge. So you can even draw the structure of ions. You can even draw the structures of atoms. Is that right, everyone of you? Yes, sir. Yes, sir. So these are very, very important, very basic things you need to keep remember about the periodic table, and these are very useful informations. You need to use these things in your final exams to just check your answers कि यार आप सही भी कर रहे हो या नहीं, ठीक है ना? Then we have some more things over here, बच्चों, and these things are like we need to identify which are metals and which are non-metals. So it is also very important thing over here to identify. So you can see over here, right? If, for example, if you talk about boron, so boron is one of the you can say that it is one of the metalloid. Then silicon is one of the metalloid. Then we have arsenic, which is one of the, you can say that, metalloid. So these are actually the metalloids over here that we need to know, right? These are metalloids. Then we have one more metalloid over here. Then we have one more metalloid like that. So these are actually metalloids. So you need to keep remember बच्चों कि जो इसके left hand side पर, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो सारे मेटल्स हैं. दे ऑल आर मेटल्स. लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे क्या हैं बच्चों? दे ऑल आर मेटल्स. सारे के सारे ये मेटल्स हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले. और राइट हैंड साइड वाले बच्चों सारे क्या हैं आपके पास? नॉन मेटल्स, राइट? सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस थिंग एज वेल इफ यू टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो ये जो राइट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ये सारे क्या हैं आपके पास? मेटल्स. और आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं ये सारे क्या हैं आपके पास? नॉन मेटल्स. एंड इट इज आल्सो नॉन मेटल. हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल, ठीक है ना? यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. अच्छा मैं इसका कलर चेंज सर कर ये देता हूं. कुछ क्या है? ये सारे जो सर ये राइट हैंड साइड वाले हैं ये सारे नॉन मेटल्स हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं वो क्या है आपके पास? वो सारे के सारे आपके पास हैं मेटल्स, ठीक है ना? और ये जो ग्रीन वाले हैं ना आपके पास, दे आर नोन एज मेटलॉइड्स. इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है? मेटलॉइड्स का मतलब होता है जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज मौजूद हो. तो ये जो बीच वाले हैं आपके पास ये हैं मेटलॉइड्स जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं. सही है? Is that clear, every one of you? Yes. Then
we have a few more things to remember, and these are actually the things that is over here. Like you can say that कि ये जो group 1 होता है, they are actually alkali metals. Group 1 जो होते हैं आपके पास, ये सारे कहलाते हैं alkali metals. Why they are known as alkali metals? Because when they reacts with water, they form highly concentrated alkaline solution, right? Group 2 सर आपकी आवाज कट गई है। halogens, they are known as halogens, right? Group 7 को आप halogens बोल सकते हो, और group 8 are actually noble gases, right बच्चों? So these are the things that you need to keep remember. Is that clear? सर सर दोबारा जी। रिपीट सर कर आपकी आवाज कट गई थी। सर की आप आवाज repeat चली कर गई थी मेरे पर के लिए। अच्छा, देखिए मैं कह रहा हूँ ग्रुप 1 वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं मेटल्स, तो वो कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं एल्कली मेटल्स, राइट? ग्रुप 1 वालों का नाम होता है, मतलब हर एलिमेंट ग्रुप 1 में जो मौजूद है उनका नाम है एल्कली मेटल्स, राइट? क्यों वो एल्कली मेटल्स होते हैं? बिकॉज दे आर एक्चुअली द मेटल्स व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म हाईली एल्कलाइन सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाइन सॉल्यूशन को बनाते हैं, ठीक है ना? इस वजह से वो एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 2 वालों का नाम होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है ना? इनका नाम क्या होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये भी एल्कलाइन होते हैं, स्लाइटली से एल्कलाइन होते हैं, और जो है ये अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, बहुत नीचे, इसलिए ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। उसके अलावा ग्रुप 7 वालों को हम कहते हैं हैलोजेंस, देखें ये लिखा हुआ नाम हैलोजन, और ग्रुप 8 वालों को हम बोलते हैं नोबल गैसेस, एंड दीज आर एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल्स. These are the names that you need to keep remember for your this chapter. These are the basic things, right बच्चों? यस क्लियर है सर। बच्चों? चले, तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन थी, हमने उसकी बात कर ली है। अब हम चलते हैं ग्रुप 1 की तरफ, ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? ग्रुप 1 की. सो एक्चुअली वी आर सोडियम स्टार्टिंग, लिथियम सोडियम यस, ग्रुप नंबर 1. ग्रुप 1 को मैंने अभी क्या नाम दिया बच्चों? आई टोल्ड यू दैट दे आर एक्चुअली alkali metals. They are actually what बच्चों? अल्कली Alkali मेटल्स metals. And what are the elements over there? Lithium है, sodium है, potassium, rubidium, रुबीडियम है cesium and francium. ठीक है भाई? These are actually the members of group number 1 that you need to keep remember. And also we need to keep remember that they are metals, right? They all are metals, and they are the highly reactive metals. Why they are highly reactive metals? Because you can see this, they have only one electron. The valence electron is only one, right? So you can say that when someone has a one electron in the outermost shell, the element, so it will be highly reactive metal because it can lose electrons readily, right? And what is the charge on this? When they lose electrons, they become +1 charge, right बच्चों? Right? यस सर। Okay, then the important thing is their physical properties. Their physical properties. बच्चों देखो, इनकी physical properties are very much important to know. The very first physical property is this: they are in fact metals, right? They are in fact metals, but they are soft metals. They are soft metals, right? They are what, बच्चों? They are soft metals. They are soft metals, and even they can be cut by knife. You can say that can be cut by knife, right? They are too much soft. They can easily cut by knife. I remember that when I was using sodium in the lab, I was having like I have a knife which has, you can say that, which has no sharpness. उस पे रस्ट लगा हुआ था, रस्ट हुई भी नाइफ थी, उस पे किसी तरह की शार्पनेस नहीं थी. आई वाज जस्ट, यू कैन से दैट, कि मैं बिल्कुल बेएहतियात होकर उसको संभाल रहा था. मुझे पता है वो मेरे हाथ पे कट नहीं लगा सकती, वो बिल्कुल बेकार छुरी थी. एंड मैंने उससे सोडियम काट दिया था.
यू कैन से दैट कि सोडियम या ग्रुप 1 का कोई भी मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से काट सकते हो. इज दैट क्लियर बच्चों? राइट बच्चों? Yes, sir. Then secondly, they have low densities. They have low densities. उनकी density जो है इतनी छोटी होती है, इतनी कम होती है. They can float on the water surface. Can float on water. Right? So you can say that कि यार कितनी उनकी density कम होगी, 1 से भी कम होती है. Right? Below 1. You can say that below 1. पानी की density 1 होती है, पानी से भी छोटी उनकी जो है density होती है, and they can float on the surface of water, right? And also they have, you can say that they have low melting and boiling point. They have low melting point and boiling point. They have very low melting and boiling point. You can say that the sodium का आपके पास जो melting point है वो आपके पास है almost 78 degrees centigrade. So you can even imagine that how low they have their melting points, right? And the rest of all properties of metals they have, right? तो इसके अलावा जो physical properties होती हैं metals की वो कौन-कौन सी होती हैं? Metals are lustrous, right? So they even have shyness on them, right? Also lustrous. They are ductile. They can be cut in thin wires, right? They are malleable, right? They can change their shapes by hitting or by applying forces on them, right? And they are conductor of electricity and heat. So the rest of all property that metals have, they also have, right? Every one of you. But the special, and you can say that these three are typical physical properties. Typical physical properties. And this is what these are actually journal. Right, bacho? Yes, everyone, is that right? Yes. Now, you just need to keep remember, अगर examiner आपसे पूछता है, write down typical you can say that typical physical properties of group number 1 metals. You need to keep remember, अगर आप इन तीनों में से लिखोगे तो ही नंबर मिलेगा. You need to keep remember this. ठीक है ना, कि आपने इन तीनों में से ही कोई फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है. अगर वो आपसे कहे कि आप ग्रुप 1 के मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएं, और अगर वो बोल रहा है कि आप मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बताएं, तो मेटल्स में तो आप कुछ भी लिख दें, लस्ट्रस है, डक्टाइल है, मैलेबल है, कंडक्टर है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप मेटल्स में लिख सकते हो. बट अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहा है दैट यू नीड टू राइट द टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 metals, you need to define any 2 or any one from these 3, the top one, right बच्चों? Yes. Okay, then let's move on towards trends. We have some trends as well that we need to keep remember. Trends of group number 1, right? We know that everyone know what is the word trend means. Trend का मतलब है follow करना, किसी भी पैटर्न को फॉलो करना. फॉर सपोज फेसबुक पर ट्रेंड चल रहा है कि भाई आपने जो है ये चीज करनी है, हर बंदा वही कर रहा है फेसबुक के ऊपर, हर बंदा वही चीज कर रहा है. अगर वो बारबेक्यू नाइट के अंदर वो जो गाने वाला ट्रेंड चल गया, तो हर बंदा अपनी वीडियो जो है उस गाने के साथ बना रहा है, क्योंकि दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ ट्रेंड, राइट? सो एवरीवन फॉलोइंग अ ट्रेंड, राइट? सो एवरीवन फॉलोइंग द सेम पैटर्न, राइट? सो यहाँ पर भी यही सेम चीज है कि ये एलिमेंट्स क्या पैटर्न फॉलो अप करते हैं, क्या चीज को ये एक दूसरे से फॉलो अप करते हैं, राइट? So you need to keep remember about density, the trend about density, the trend about melting and boiling point, the trend about reactivity series, right? So these are the 3 trends that you need to keep remember for group 1 metals. So the density down the group increases, right? The density down the group, these are all about down the group because we are talking about group number 1, so we need to talk about down the group. So you need to keep remember down the group. So density down the group क्या होती है बच्चों? आपके पास increase होती है, melting boiling point आपके पास down the group decrease होता है, और reactivity आपके पास down the group increase होती है, right? These are the things that you need to keep remember. कि ये increase decrease वाली कहानी आपने याद रखनी है, ये काम आएगी आपके पास MCQs में. Now the very
important thing of this chapter is actually chemical properties. Chemical properties are very much important that you need to keep remember बच्चों, chemical properties. So if you talk about chemical properties of group 1 metals, so the very first chemical property, you can say that property number 1 is a reaction with water. Property number 1 is actually what? Reaction with water. Reaction with water. So if you talk about reaction with water, it is fixed, right? We have a journal pattern of this. So you need to keep remember, if any alkali metal, any of the, we have 6 metals, any one of them is when reacting with water, they always form what? They always form alkaline solution. Alkaline solution कौन सा होता है जिसमें बच्चों OH होता है. Alkaline solution जो होता है जिसके अंदर क्या होता है आपके पास मेटल हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि आपके पास ये प्रॉपर्टी मैंने फिक्स कर दी, इसका मैंने जर्नल पैटर्न आपको बना के दिखा दिया कि आपने यही फॉलो करना है. सो जस्ट लुक एट ओवर हियर. फॉर सपोज आई एम जस्ट एडिंग सोडियम इनटू वाटर, राइट? सो यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों कि इसमें बनेगा आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. नाउ द थिंग इज hydroxide having -1 charge and it is group number 1, sodium have +1 charge. When the charges are opposite and the numbers are same, we just need to combine them together to make a formula. So NaOH will be sodium hydroxide along with hydrogen gas, right? So this will be the equation. But for the balancing, you can see there that we have 1 and 2, 3 hydrogens over here, and we just have 2 hydrogens over there. So for the balancing, but you need to keep remember, first of all, you must need to make the odd number even, right? So you can see this, we have odd number hydrogen over here. So we can write 2 over here. So in this way, we have 2 hydrogens, right? 2 hydrogens over here and 2 hydrogen over here. We have 4 total hydrogens on the right hand side. So we can simply write 2 over here to make this balance. Is that clear, bacho? Is that clear, bacho? लेफ्ट साइड पे सोडियम के सामने भी आपको 2 लगाना पड़ेगा. जी बिल्कुल लगाना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी मेरे पास ऑक्सीजन के साथ भी 2 आ गया, मेरे पास सोडियम के साथ भी 2 आ गया, right? This is the 2 for both of them. So you can see this, that oxygen is already balanced, but I need to write 2 on the left hand side to make sodium balanced over here. Is that clear? Now the equation is completely balanced. Yes, every one of you, is that clear? Yes sir. Yes, sir. Now we need to write the state symbols over there as well. We know that sodium is a metal, so it should be solid. We know that water is liquid, so sodium hydroxide is a soluble one. We know that salts, so we know that all the hydroxides are insoluble except sodium and potassium, so it should be aqueous and it should be gaseous, right, bacho? Yes. Now the very most important things to remember over here is observation. The observation of this reaction. Observation of this reaction is very important. Observation. Now you need to keep remember, bacho, that do not mention the name of the product, right? Do not mention the name of the product during your observation. You need to keep remember the observation is same for all of them. जो कि पढ़ा लिखा हो या जो पढ़ा लिखा ना हो, उन सब के लिए ऑब्जर्वेशन सेम होती है. एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन कि आप ऑब्जर्व क्या करते हो ड्यूरिंग द रिएक्शन, आप क्या देखोगे. तो जो आप देखोगे वही आपका लैब असिस्टेंट भी देख रहा होगा ना. जो आप देख रहे होगे वही, अगर फॉर एग्जांपल आपकी लैब में कोई मासी सफाई करने आ रही है तो उसको नहीं पता व्हाट इज केमिस्ट्री एंड व्हाट इज द रिएक्शन बिहाइंड दिस एंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर, बट जो आप देख रहे होगे तो वही मासी भी वही चीज देख रही होगी ना. तो द ऑब्जर्वेशन विल रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ देम. हर किसी के लिए ऑब्जर्वेशन कैसी होगी भाई? सेम होगी, ठीक है ना. तो ऑब्जर्वेशन बतानी है आपने इसमें, ठीक है बच्चों. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी हमारे पास यहाँ पर? ऑब्जर्वेशन ये होगी, देखें सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करते हैं हम. सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे
ये चीज that आप देखो यहाँ पर one of the solid is present over there, right? There is one solid in the reactant side. This is solid, right? बच्चों, right? Yes, sir. Yes. You can see this on the reactant side when you are starting the reaction. When you are starting the reaction at the reactant side, you have one of the solid, right? But over here in the product side, do you have any solid? No, Do you sir. have any solid? So you can say that one of the very basic observation over here, you can say that that solid disappears. जब आप ये reaction देखोगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि जो आपने solid डाला था, it is going to be disappear, right बच्चों? Yes, sir. Then the second thing that you are going to see from the equation, बच्चों, the second thing from the equation, you can see this, that we have one of the product is gas, right? Right. Yes, sir. So बच्चों, you need to keep remember, जब कभी भी कोई सा भी रिएक्शन हो पूरी केमिस्ट्री में 25 चैप्टर में से 12 सिलेबस आउटकम में से कोई सा भी रिएक्शन हो, किसी तरह का भी दुनिया जहां का कोई वो केमिकल रिएक्शन आपको उठा के दे दें, अगर उसमें आपको प्रोडक्ट में गैस नजर आती है, अगर उसमें आपको प्रोडक्ट में गैस नजर आती है, so you can say that a gas physics. Right now it is hydrogen gas, so we know that it is a colorless gas. So you can say that a colorless gas physics. You can say that a colorless gas physics, or you can even use the word effervescence. Right? Right, Bacho? Yes, sir. And if you remember one more thing, I just told you in the physical properties of group 1 metals, we know that group 1 metals have lower densities, right? They can even float on the surface of water. So when you add them starting in the starting, when you are going to add them into the water, so they definitely react with water, but initially the sodium metal floats on the surface of water, and then slightly they are going to be consumed when they are going to be react, right? So you can say that metal, या आप metal ना भी लिखें तो आप solid भी लिख सकते हैं, solid floats on the surface of water, right बच्चों? Is that right? Yes, And sir. as this is Sir, from group can number you say 1, the last point again? yes, I am saying that group 1 metals are less dense than water. Now I told you in the physical properties that the density of group 1 metals are always less dense than water. You can see this below 1, right? So you can say that when you add them into the water, so initially they floats on the surface of water and then they are going to be react, right? Definitely the below, the part which is interacting with the water, definitely reacting with water, but initially they are going to be float on the surface of water. फिर आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन होता जाएगा, वो खत्म होता जाएगा, right? Yes. And then you can even say that group 1 metal है तो highly reactive होगा, so you can say that a rapid reaction, or you can say that a fast reaction, right बच्चों? Is that clear, every one of you? Yes, sir. So बच्चों, this is the most important part of this lecture. So you need to write it down in your copy, and also you need to write the reaction of potassium with water. You need to write the reaction of rubidium with water, and also the reaction of lithium. So just do it quick and write these 3 reactions and send me on my WhatsApp so I can check you are doing it right or not. Just do it quick.